We entered Bandipur National Park once the gates opened, and inside a breathtaking view awaited us. Lots of vegetation, early morning fog, and wildlife on either side of the road were to be seen. Rays from the early morning sun also added to the beauty of the park. Our next stop was at Edakal Caves, which are natural caves at a remote location at Edakal, 25 kilometers from Kalpetta in the Wayanad district of Kerala. They lie 1200 meters above the sea level on Ambukkutti Mala near an ancient trade route connecting the high mountains of Mysore to the ports of the Malabar coast. Inside the caves are pictorial writings believed to date to at least 6000 BCE from the Neolithic man, indicating the presence of a prehistoric settlement in the region. To reach the cave from the vehicle disembarking point, one has to trek for around 500 meters, which is initially very gradual, taking us through dense tropical forest of Kerala, and the view is breathtaking. Subsequently, the climb becomes slightly tough as we have to negotiate some rocky patches and steep climbs. The view from the top is again breathtaking as well as amazing, yet challenging. After trekking for almost 15 minutes, we finally reached the Edakal Caves, and the view from the entrance was simply amazing. Inside the caves, on either side of us, we could see carvings depicting various aspects of their prehistoric lifestyle. One aspect which fascinated me was the care being taken by the staff to keep the area clean. We met our local guide, Mr. Saji, and he briefed us about the Edakal Caves. ये 30,000 साल पुराना केव है। एक earthquake में बना भूकंप में। Okay. नाम एडक्कल मीन्स इन बिटवीन द स्टोन, दोनों के बीच का पत्थर। उसके बीच में एक पत्थर हैंग हुआ है, इसलिए इसका नाम एडक्कल है। इधर 6000 साल पहले ओल्ड ट्राइबल्स रहा था। उस टाइम पर उनको आपस में कम्युनिकेशन के लिए कोई लैंग्वेज होना था, इसलिए कम्युनिकेट करता था। ये सेम पर्सन बैक साइड से। ओके। ये फ्रंट साइड, बैक साइड। ओके। इधर एक फेस। हाँ। राइट साइड में एक एलिफेंट। ओके, यस। ऊपर एक लेडी फिगर। हाँ। लेफ्ट साइड में एक बच्चे की फिगर, चाइल्ड। ओके। हाँ। इधर एक राउंड साइड। हाँ। राउंड के ऊपर एक पीकॉक है। ओके। राउंड है लाइक सन, पुराना लोग पूजा करता था, गॉड मानता था सन को। सन का फिगर, वो एक ट्रॉली व्हीकल का सिंबल है, उस टाइप जैसे। उसके ऊपर 2 व्हील्स है, उसका व्हील बने, ये पुशकोट व्हीकल माना जाता है। ये कार्विंग करने के लिए और उस टाइम पर उन्होंने जो वेपन्स यूज किया था, उसका सिंबल्स है। नाइफ, चिसेल्स, डैगर टाइप लग रहा है। यस यस, पूरा स्टोन का है। स्टोन भी वेपन बना के उन्होंने हंटिंग वगैरह करते थे। उसी टाइम पर का लोग एक लेडी, ये एक वाइल्ड एनिमल का सिंबल।
हेड बॉडी टेल लेग टेल वगैरह वाइल्ड एनिमल। एक स्टिक पिक्चर सा जो स्टार्टिंग में बच्चों को हम बोलते हैं पिक्चर बनाने के लिए, वही वाला स्टिक पिक्चर। एक एलिफेंट का हेड, हाँ क्लियर दिख रहा है हेड विद द ट्रंक। ये पाम ट्री का सीन, यस पाम ट्री। ये दो फ्लावर, ओके दो फ्लावर। एक वाइल्ड डॉग जंप करते हुए सर आगे की तरफ, वाइल्ड डॉग जंप करते हुए। ये सर स्क्रिप्टेड, ये 2500 ईयर्स ओल्ड है, 2000 से 2500 के बीच का है, ब्राह्मी तमिल में लिखा है। तो दैट मींस कार्विंग पहले हुआ है 4000 बीसी में, ये उसके बाद में हुआ है। स्टेप बाय स्टेप लग रहा है। वो 6000 है, वो जो लेडी फिगर 3000 है। वो 300 इसलिए माना जाता है कि बाकी फिगर्स थोड़ा फिनिशिंग अच्छा है उसका, सिर्फ थोड़ा एज कम माना जाता है। ये स्क्रिप्ट ब्राह्मी तमिल, ये प्राचीन संस्कृत। ओके, ये ब्राह्मी तमिल में लिखा है पला पुली ताता कारी वेडुंगो मले कच्चवनी चट्टी, मीनिंग ए मैन हु किल्ड अ लॉट ऑफ टाइगर्स लिव्ड हियर। ओके, बहुत सारा टाइगर को मारा हुआ स्ट्रॉन्ग लीडर। ओके, ये प्राचीन संस्कृत है। ओके, इसमें लिखा श्री विष्णु वर्मा ना कुटुंबीय कुलवर्धन लिखित श्री विष्णु वर्मा बोल के जो किंग है यहाँ इधर उसके कुटुंब मतलब फैमिली, कुल मतलब जाति, दोनों की श्रेयस के लिए लिखा है, ये उसका मीनिंग। ये एक इम्पोर्टेंट पिक्चर है इधर का, मैन विथ ए जार। ओके, जार आदमी लेकर फ्रंट में जार है। ये भी एक लेडी फिगर। ओके, ऐसे बहुत सारे फिगर्स है सर, 500 स्क्वायर फीट में फिगर्स है पूरा। हिल्स का नाम अम्बुबुत्ती। ये पूरा जो है पूरा एक हिल्स का नाम पूरा पार्ट। ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना? सर वेस्टर्न घाट का ये। और ये पहले ऊपर भी भेजता था, 100 फीट ऊपर और मिलता था। ओके, अभी 2009 से लेके ये बैन किया। ये भी इधर एक व्यू पॉइंट है, एक नेचुरल रॉक कटिंग है वो भी। ओके, वो एर्थक्वेक में ही बना रॉक कटिंग। अभी हम एक छोटा सा व्यू पॉइंट की तरह उसको यूज करते हैं, पर वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ आप इधर से करा के जा सकते हैं ना, वहाँ से अच्छा व्यू आता है। अच्छा व्यू, एक नेचुरल रॉक कटिंग है। This rock cutting reminded me of 2010 movie 127 Hours. After spending approximately 30 minutes in the prehistoric era of Edakal caves, we commenced our journey down the hill, discussing various aspects and our experience inside the Edakal caves. Our next stop was Karapuza Dam Park, an adventure park located adjacent to the Karapuza Dam and Reservoir. The park is very beautiful and has been landscaped in a very nice manner with lots of beautiful trees and plants around. The park has many activities for adventure seekers and also gives a breathtaking view of the Karapuza Dam and the reservoir which is located adjacent to it. We had booked a room in Niyatma Resort, a resort nestled in between coffee plantation and a forest. The view from the resort and its rooms were simply breathtaking. The chirping sound of the birds made it memorable.
Our room was on the top floor of the cottage, as you can see on the screen, and the view from there was simply awesome. After breakfast, we left to see Phantom Rock, which is big boulders balancing on top of one another. Our next stop was at Honey Museum. Honey Museum gives us an insight of the life cycle of honeybees, the collection of honey and the processing of the same. This museum also sells high quality honey for different types of usages. फॉरेस्ट में जाके हनी कल करके अपना हाथ से प्रोसेसिंग करके लेगा, नहीं तो कपड़ा डाल के प्रोसेसिंग करके लेगा। ये दोनों बल्ली से हनी का अंदर पड़ेगा, हनी बी का बैक्स, हनी बी का प्रोडक्ट। ये दोनों अंदर है तो लंबा टाइम हनी इस्तेमाल नहीं कर सकते। We were given a tour of the museum and the processes involved were briefed in detail. ये है अपना हनी म्यूजिक, ये वैसे एक ही म्यूजिक। दुनिया में किधर भी है तो हनी मिलेगी, ये 3 किस्म का बी पाना चाहिए, मेल, फीमेल, बी। उसी टाइम 1 साल के लिए एक कितना स्पर्म चाहिए उसी टाइम पूरा कल करने के लिए 6 से 15 तक मेल का साथ नहीं करता है। मैं क्यों ना हमेशा बड़ा रहे तो ताकत भी रहेगा, तो मेल एकदम छोटा भी रहेगा, उसका बिल्कुल उसका 4 साल 5। अभी आपसे एक आदमी एक पत्थर उठा के इसको मारा, जो मारा वही आदमी को निशान करके आगे रखे, दूसरे को कुछ नहीं करेगा। इसका पांचों 360 डिग्री में हर जगह घुमा सकते हैं, आगे पीछे ऊपर। और प्लान 1 किलो मिलने की जगह में ये 100 ग्राम मिलते हैं, थोड़ा महंगा है फिर भी अच्छा है। ह्यूमिडिटी ये वही है, हिमाचल से करता है। रिक्वेस्ट में आप पर दिस ऑर्डर बीमार कीजिए। नॉर्मली 1 साल का है तो 10 साल का, और 1-1 साल में इसे डाक होते रहे तो खराब कर दीजिए। ये है वैक्स। After having tasted the sweetness of honey, we moved on to Pokode Lake, which is slightly on the outskirts of Wayanad.
At the end of our journey, having taken the Badipur National Park route to enter Wayanad, we decided to take the Nagarkol National Park route to exit Wayanad towards Mysore. After exiting the Nagarkol National Park and the hills of Kerala, we reached Taraka Reservoir. We spent few tranquil moments watching the sunset over the reservoir and wildlife across it.